Indigo Revolt or Blue Rebellion, or it's also known as in Hindi Neeli Kranti. So it's better to know about what it is. I hope so you can see inside this color, that blue color which is showing. So this blue color which you are seeing right now, so this all blue color thing were known as Neel in Hindi, or in English we can say that blue color, dark blue color dye which we use for making our white cloth little bit blue and shining thing. For that we use, or on that time I'm talking about near 18th century. On that time Britishers, they were using this blue color for making their cloth much more better and attractive, and that's the reason this demand was much more increased in whole European countries. So you can see where the farmers are growing. On that time this Indian climate was much more good for growing this indigo, and the demand of Indian indigo was much more increased in all over the world, especially in European countries. And that's the reason on that time this all farmers were forced to grow indigo in their land surface. So mainly we can categorize this all nil that indigo cultivation. Mainly we can categorize there were two main systems of indigo cultivation. One which were known as Nij system, and the another were known as Raiti system. So this first one, Nij system, according to this system, the planter themselves produce indigo. So what happened here? One planter person is there, and that person himself only grow indigo in his land surface, or he borrow from someone and he grow in that particular land surface. What he do? That planter directly employ hired labor to produce indigo. So what he is doing? He hired some farmers, some laborers. You can see inside this diagram. So he hired these all laborers to work in his land surface, and whatever the profit he got, finally that all are left with the main planter person. So this were known as the main niche cultivation. But afterwards some main great problems were increased under this niche cultivation. What happened? For growing this indigo they need fertile land surface, but after doing in the same land, if they are using it once, the next time that land become infertile. The reason was this, students, that if you will grow this indigo, if you will see the root of this indigo plants, the roots are much more longer. एक बार जो अपने किसी लैंड सरफेस में अगर कोई किसान जो है वो इंडिगो का कल्टीवेशन करता था, नीली वाला जो प्लांट है उसको ग्रो करता था, उसके ग्रो करने के बाद वो जो लैंड सरफेस होता था वो इनफर्टाइल हो जाता था. उसके बाद वो उस लैंड सरफेस पे किसी और फूड क्रॉप से किसी को भी ग्रो नहीं कर सकते थे, जिसके कारण वो लैंड सरफेस उन्हें छोड़ना पड़ता था, जिससे उनका घाटा होता था. नेक्स्ट, ये जो इंडिगो था निच कल्टीवेशन जिसके अंतर्गत वो लोग कर रहे थे, तो फॉर दैट दे नीड अ लार्ज लैंड surface, but it was not possible for them. The reason was this, that area were totally populated. वहां बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे थे, जिसके कारण उनको छोटे छोटे प्लॉट दिए गए थे, और छोटे प्लॉट में इंडिको कल्टीवेट करना बहुत डिफिकल्ट था. सो दिस ऑल वे द न्यू प्रॉब्लम विच क्रिएटेड विद दिस निच कल्टीवेशन. सो व्हाट वी डिस्कस अंडर दिस निच कल्टीवेशन, वेयर वन प्लांटर इज देयर, एक मेन पर्सन होता था जो प्लांटर होता था, वो क्या करता था, वो इंडिगो ग्रो करता था. कैसे ग्रो करता था? वो प्लांटर जो था वो खुद ही दूसरे लेबर्स को एम्प्लॉय करता था, वर्क देता था अपने लैंड सर्फेस में ग्रो करने के लिए. Like this, niche cultivation was working. Next, we are moving towards the Rayeti cultivation. This Rayeti cultivation, on the inside this, the planter get indigo produced by Rayet. So what happened here? The planters get indigo produced by Rayet. So whatever planters, what they do first, under the Rayeti system, the planters force the Rayets to sign a contract, steps involved in Rayet cultivation. यहाँ पर जो मेन प्लांटर था वो क्या करता था, वो फार्मर्स को या उनको फोर्स करता था कि वो साइन करे इस कॉन्ट्रैक्ट को. इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ये जिसे हम सत्ता भी कहते हैं, इसके अंतर्गत उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाएगा. दोज हु साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स टू लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो. तो उनको कम रेट में, कम इंटरेस्ट रेट में पैसे दिए जाएंगे, जिसके कारण कई सारे लोग अट्रैक्ट होकर के इनसे लोन लेते थे. द लोन कमिटेड द रायर टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन द लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग. पहले क्या किया उन लोगों ने,
उनको एक फोर्सफुली साइन करवाया गया एक कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, उन्हें कैश प्राइस मिलेगा, उस जो कैश पैसे मिल रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहेगा। उसके अलावा दूसरा, जिस फार्मर ने उनसे लोन लिया है उस फार्मर को क्या करना है, उसको 25% लैंड सर्फेस पे अपना इंडिगो ग्रो करना है। मतलब जितना भी उनका लैंड सर्फेस है तो उसका जो एक कॉर्नर होता है लैंड सर्फेस, उस कॉर्नर का जो टोटल 25% होता है वो उस एरिया में उसे सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ग्रो करना है। तो इसको हमने रेती कल्टीवेशन कहा। यू कैन सी दिस pie chart, or you can say this mind map. Under this, what happened, the first of all, where agreement signed, they are signing one agreement which were known as satta. Then afterwards race get cash advances from the planters at low interest. उन्हें काफी कम लो इंटरेस्ट में उन्हें कैश मिला रैयतों को काम करने के लिए। it in return, Rayat had to just cultivate indigo on the least 25% of the area under their total land ही हैड। सो इसके बदले में क्या करना था उन फार्मर्स को अपने लैंड सर्फेस पे 25% एरिया पे इंडिगो कल्टीवेट करना था। उसके बाद क्या होता है, इंडिगो क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू प्लांटर्स एंड अ न्यू लोन वॉज ग्रांटेड टू रयट्स। अब इन लोगों ने इंडिगो कल्टीवेट किया, दैट आफ्टरवर्ड्स दिस इंडिगो वेट गिवन टू द प्लांटर्स, और जो प्लांटर्स इंडिगो लेते थे वो बहुत कम प्राइस में लेते थे, जिसके कारण फिर से उनका ये जो एग्रीमेंट था वो फिर चालू हो जाता है। और इस तरह से ये जो सर्किल है, दिस मेन सर्किल वाज कंटिन्यूइंग। सो अंडर दिस रईती सिस्टम, nobody was like the farmers were not free. Again they have to take the loan, again they are doing cultivation in the 25% of the land surface, again they will give this indigo to the planters, again they will buy in the less cost, again they have to take the loan. So this system was continuing. प्रॉब्लम्स इन रईती कल्टीवेशन, आगे जाके क्या प्रॉब्लम फेस किया गया इन फार्मर्स ने। peasants soon realized that the system was not correct. उन्हें रियलाइज हो गया फार्मर्स को कि ये जो सिस्टम है वो सही नहीं है। they got less money for the indigo and the cycle of loan did not end. उन्हें समझ में आ गया कि हमें जो पैसे मिल रहे थे वो बहुत ही कम थे इंडिगो के, और जिसके कारण ये जो लोन वाला साइकिल है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। Second problem, planters wanted the indigo to grow in the best soil for a good yield, but the best soil was used for rice cultivation. फार्मर्स जो थे वो अपना जो फर्टाइल लैंड सरफेस था वहां पे उन्हें अच्छे फसल के लिए, अच्छा उसके लिए इंडिगो वहां पे ग्रो करना पड़ता था। और वहां पे अगर इंडिगो को ग्रो करते हैं तो उनका जो मेन फूड क्रॉप था एज लाइक राइस वीट, वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाते थे। उसके बाद वो लैंड इतना भी फर्टाइल नहीं था कि वो वहां पे फिर इंडिगो ग्रो कर पाए या कुछ भी अपना दूसरा फूड क्रॉप्स ग्रो कर पाए, जिसके कारण वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। If they grow the indigo in that soil, the soil will be exhausted. Once indigo is harvested, paddy or this cannot be grown in that soil. So अगर एक बार किसी भी फार्मर्स ने उस लैंड सर्फेस पे इंडिगो ग्रो कर दिया तो उसके बाद जो फार्मर्स थे वो अपना फूड क्रॉप्स उस लैंड सर्फेस पे ग्रो नहीं कर सकते थे, जिसके कारण इन फार्मर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, जिसके सारे के सारे फार्मर्स जो थे वो धीरे धीरे एकजुट आए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। You can see the year, it's written here 1859. Just before 1859, if we'll move towards little bit historical timeline, so the year of 1857 was the great revolt which was there in our country. So just after this revolt of 1857, just the farmers, they came together and they thought that we have to fight against this indigo thing. And that's the reason most of the people in Bengal, all the farmers especially, came together. You can see here on map, most of the blue color where is showing that all areas where indigo was grown, and due to the forcefully of the Britishers or the planters due to them. So finally this all farmers came together. They went against of this British government and they raised their voice. Those who were the main planters person or those who were forcing them to grow, they all started doing fighting with them, doing beating them, and that's the reason finally this revolt came. So this revolt were also known as Blue Rebellion or 1859. And slow at last, finally this Victoria, she have to take she declared about it that now nobody will force anyone to grow indigo. But only this was not finished here. Afterwards, it was continuing in Bihar area as like in Champaran place.
when Mahatma Gandhi he came back from South Africa, the people called him for supporting him for in this cultivation place through the farmers. Finally, in this Champaran Satyagraha, where you can see, thank you.